Now let us start our class, today's class. I welcome you all today in this class, online class you may say. One day I have engaged my classes with 4 students. There were only 4 students were present in the classroom, and after that very day the notice was circulated among the teachers that online class will be held only. Therefore, I have started. Your class will be held alternate day. Today I am engaging your class. Tomorrow I will engage the class of third semester, and a day after tomorrow, another day, your class will be held. So, in a week, according to the present situation, 3 days I will engage your classes, and I have told you that I will teach you the rhyme of the ancient mariner. The rhyme of the ancient mariner is a narrative poem by S.T. Coleridge. S.T. Coleridge is a romantic poet. He belongs to the 19th century. But before that, before going into the details of the rhyme of the ancient mariner, we will have to understand the background of the romantic age. Actually, the age which is known as romantic age came in the 19th century. We call it in our language romantic age, but actually this age is known as a romantic revival. So why do we call it romantic revival? Why does why this nomenclature was given to this age as a romantic revival? We shall discuss later on. Actually, there are two terms in the history of English literature. These two terms are very common and very, very important. Everybody knows that about these two terms, romanticism versus classicism. They are opposite to each other. And classicism versus romanticism, romanticism versus classicism. So it seems to be very easy, but most of the people tell that this boy is a romantic boy, this girl is a romantic girl, but why do we call them romantic? What is the reason? This is the most important thing. We call in a general way, in a general language, that this boy is called romantic boy. He is very romantic. He is very cute. So why do we call them romantic? Whether it is boy or it is a girl. Why this nomenclature has been given to him? What is the reason? So we have to understand these two things. Firstly, we should know there are two words, classicism and romanticism. Without understanding classicism, we cannot understand romanticism because both are opposite to each other. And if you understand classicism, then it will become easier to understand romanticism. So, firstly, we should know classicism. Actually, there are two types of songs. One is classical song, another is creative song. If
you go to the orchestra party, or if you go to any musician, he will tell you, he will suggest you that firstly you will have to learn classical songs. Without learning classical song, we cannot learn creative songs. So the advice is given to the learners that firstly you should need to learn classical music. Now the question is, what is classical music? Which music means which is based on rules and regulations. The music which maintains the musical rules and regulations, that music is called classical music. The song which is based on the rules and regulations of music, which is based on the rules and regulations, that music, that song is called classical song. For example, there is uh, a song, Gagga sa gamma pa pasa gasa nisa gamma. Muralikite rasuni ya sakhire chitavana chanchal. Gasa nisa gamma pa chitavana chanchal. So this song is based on the musical rules and regulations, on the rules and regulations of music. So you must have heard the name of different types of raga. The first raga, which generally people or learners learn, is known as Rag Bhupali. Rag Bhupali. Sa re ga sa re ga pa dha sa. Sa re ga pa dha sa. So this is based on 5 matras. Sa re ga pa dha then sa. There are 7 tunes. Among them, 2 are strictly prohibited. Dha, pa, and ma. Both are strictly prohibited. They are not used in Rag Bhupali. So, the song based on these 5 matras, sha, re, ga, pa, dha. So this is called Rag Bhupali. And if you learn the music based on the rules and regulation, that music is called classical music. So classical means based one which is based on rules and regulations, whether it is music, it is song, or even it is a person. If your grandfather, your grandmother is there and he tells you that you should not do all these things, then you call him, he is a methodical person. He is old type of person. So classical means based on methods and maintains the rules and regulations. So this is the meaning of classicism. In the same way, the literature
which is based on rules and regulations. The poet who maintains rules and regulation in writing poetry, that poetry is called classical poetry, and the poet who writes classical poetry is called a classical writer. Actually, uh, whether Aristotle, uh, Aeschylus, Sophocles, Euripides, these are Socrates, Plato, these are called the Greek classics. Their poetry is based on Greek, their poetry is based on rules and regulations, and they are from Greece. Therefore, they are called Greek classics or classical writers. And their knowledge was borrowed, their teaching was borrowed, their rules and regulations were borrowed by the Latin writers. Latin writer means Roman writers, and they were also called classical writers. They are Victor, Palsy, Casti, Palsy, Horace, Longinus. These are called classical writers. So their writings are based on rules and regulations. Therefore, they are called classics, and their writing is called classical. Actually, these writers, whether it is Aristotle, Socrates, or Socrates, it is also called, and Plato, you may say Aeschylus, Sophocles, Euripides, then Horace, Longinus, and Victor Hugo. These are called Dante. These are called classical writers because they maintain the rules and regulation. For making you understand, I have given you the example from music, that music based on rules and regulations is called classical, music. Similarly, the writings which maintain the rules and regulations is called classical writings. Before Shakespeare, dramas were written, but they were written on the principles, on the rules and regulations propounded by Aristotle. That is unity of time, place, and action. A drama must maintain the unity of time, place, and action. But when Shakespeare came, he you may say, broke the rule. Shakespeare came and he broke the rule. All the incidents do not occur at one place. You must have read The Merchant of Venice, a drama by William Shakespeare. It is tragic comedy. Some incidents occur at Venice, but some incident also occurs in Belmont. So the place is not one, rather two or three. So here the rule is broken by William Shakespeare. And what will be the opposite
term of the term classical. The opposite term of classical is romantic. The opposite term of classicism is romanticism. So you should never forget that the romantic age has already come in the 16th century, has already come in the 16th century. 16th century is also known as romantic age. And after that, the gap occurred and again it came in 19th century. Before that, again the classical age came in 18th century, and that is known as neoclassical age. So we should never forget that when the term one which maintains the rules and regulations, that is called classicism, and one which breaks the rules of classicism is called romanticism. Now I have already pointed out that when a boy sees a girl and he starts smiling, we call him, this boy is romantic, very romantic. When a girl sees a boy and she starts laughing and you start discussing with your friend that, oh, this girl is very romantic. Now the question is, why do we call them romantic? According to our social norms, according to the norms of our society, if we see a boy, we must regard him as a brother. According to our age, if you are an aged person, you may treat him as your son. If you are in the similar age to the boy, you must treat him, you must regard him as a brother, as a son. So it depends on your age. If a boy is in the age of a girl and the girl is also similar to the age of a boy, they must treat each other as a sister and brother, as a brother and sister. This is the social norms in our society. This is the norms of our society. When you live in your house and your grandfather is alive, some boy comes to your house and you start talking to him, though you have no relationship with him, though you have no any familiarity with him. When you are seen talking to a boy or talking to a girl, your grandfather prohibits you, prevents you from talking to the boy or a girl. Why do you talk to him? So the man, and if someone tells you your grandfather is not a good person, he prohibits you to talk to a boy, or the boy tells you your grandmother is not nice lady. You put a question before him, why? He will tell you, she prevents you from talking to me. This is not a good thing. So you tell about your mother, you tell about your grandmother or your grandfather. No. He is methodical person. He is old type of person. He is a traditional person. So it means what? What does it mean? It means he is a man who maintains the rules and regulations according to the society. So this is For the society. according
to the society, rules and regulations according to the society. So, uh, the, in our society, it is the rule we should not talk to any unknown person as a as a familiar person, because they may deceive you, they may cheat you. So the tradition in our society that you should not talk to any unknown person with familiarity. That's why you are prohibited, you are forbidden by your guardian. So you call him, he is old type of person, he is classical person. Now you break the rule. You break the rule without any understanding. You become familiar with each other and started talking to them. So you have broken the rule. Therefore, whether it is boy or girl, they are called romantic boy or romantic girl, because she has or he has broken the rule. So one which is based on rules and regulation is called classical. One which breaks the rule is called romantic. This is the main thing. Therefore, we call them romantic boy or a romantic girl. This and similarly, it happens with Shakespeare. Before Shakespeare, the dramas were written as per the rules propounded by Aristotle, maintaining the unity of time, place, and action. Place should not be changed, the place should be one, time should be within 24 hours, and action should be good. And if you maintain all these things, that theory was propounded or given by Aristotle. But when Shakespeare came in 16th century, he broke the rule. And therefore, the age, actually, the opposite term of classicism is romanticism. So he has broken the rule. Therefore, the age which came in 16th century is known as romantic age. I have already told you that romantic age has already come in 16th century, and after a long gap it came again in the 19th century. In the 19th century, similarly, before 16th century, the dramas or poetry or whatever writing may be, where was written based on the rules and regulations propounded by Aristotle, but it was broken, the rules were broken, and हिंदी में समझाइए सर, excuse me, हिंदी में थोड़ा मैंने अभी बताइए. हिंदी में क्या बतावेंगे, हिंदी में इनको बतावें कुछ ही तो. हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना सर, दम इंग्लिश बोले जा चुप रहे हैं, रहो, हिंदी में बतावेंगे तुमको कुछ ही तो. हिंदी में इनको बतावे, पीजी का स्टूडेंट है, हिंदी में इनको सिखावे हम. So you should know that the age is known as romantic age, and this is called romantic age. So these two terms are opposite to each other, romanticism and classicism. Before 16th century, classical writers were from, you may say, Greece, Rome, and later on in 18th century, writers were from the British English or from England. You should know that
in 18th century, the age came which is known as neoclassicism, and against this age came in 19th century, that age is called romantic revival. So you should know that romantic, why do we call neoclassicism and why do we call romantic revival? This is the main thing. I have, or you must have read The Rape of Locke. The Rape of Locke is a mock epic poem by Alexander Pope, and it is prescribed in honors, BA Part 1. I have taught The Rape of Locke in honors, and this is called mock epic poem, and the poet is Alexander Pope, and he belongs to neoclassical age. There is a prefix before classical or neoclassicism known as neoclassicism. Why do we call it neoclassicism? And why do we call there is a prefix suffix after the word romantic, that is called revival? Romantic revival and neoclassicism both are opposite to each other, and you should always remember one thing in a clear-cut age. There actually in fashion technology, you may understand through the example of fashion technology. Actually, थोड़ा हिंदी में बताइए sometimes, सर। कौन तुम बोल रहे हो? क्या बोल रहा है तुम जी? ये कौची बुजुर्ग का क्लास है? हिंदी में बताइए। तुमको क्लास करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तुम्हें को लड़का है, माथा खराब किए हुए हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। ये बच्चा क्लास है क्या? पागल नियन बात करता है। तुम नया हुआ क्लास करने, कभी नहीं जिंदगी में क्लास किया है ऑनर्स पीजी का क्या? माथा खराब किए। हम पढ़ाने के लिए हैं तो ये अथी हिंदी में बताइए और उर्दू में बताइए और फारसी में बताइए। करना है तो तुम क्लास करो, नहीं करना है तो जाओ। डिस्टर्ब थोड़ा क्यों थोड़ा करते हो? बताइएगा सर, क्या थोड़ा थोड़ा बताइएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब क्या बतावे? थोड़ा थोड़ा बता। हिंदी कभी कभी एक्सप्लेन करिएगा सर। हिंदी का नहीं होता है यहाँ क्लास, ये पीजी का क्लास है, समझ। यहाँ से मतलब तुम सब समझ जाओगे, क्लास करोगे तब ना। जिंदगी में कभी क्लासे नहीं किए होगे तो कुछ ही समझेगा। तो वही चलते ना बोल रहे हैं सर, थोड़ा हिंदी समझाइए। शांत इंग्लिश रहो बोलने तुम, जा रहे हैं। हमको पढ़ाने दो। हिंदी उन्दी नहीं होता, ऑनर्स पीजी में नहीं नियम है क्लास अच्छी करने का। हिंदी का क्लास रूम है, अच्छी है, बच्चा का क्लास है, सीखो। कोई मीनिंग समझ में नहीं आता है सर, तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आवेगा? जा करके पढ़ो, और कैसे समझ में आवेगा? डिस्टर्ब मत करो बाबू। मुश्किल से क्लास, एक तो ऑनलाइन क्लास अपने ही बाहर वाला चीज है, जखने से रहो बोलते रहो, इसीलिए वो सब मत कर। तो नहीं पूछेंगे सर हिंदी में अंग्रेजी में तुमको ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड? ओके सर। देयर इज नो एकोमोडेशन ऑफ हिंदी, समझ गए कि नहीं? अब डिस्टर्ब मत करो। बट सम पॉइंट विल बी एक्सप्लेन इन हिंदी सर। कुछ नहीं हिंदी में होगा, समझ गए कि नहीं? तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, और डिस्टर्ब मत करो। हमको क्लास लेने दो, समझ गए ना? तुम नया लड़का हो, रहो अपने स्तर से। तुम्हें अरे हमको पढ़ाने दोगे कि हम बंद कर दें? हमको माथा मत खराब। जो यहाँ अच्छी नहीं है, किताब देख करके हमको पेपर नहीं पढ़ना है, बोलना है। नो सर, पढ़ाइए सर, आप चुप रहिए। हम चुप रहे? नहीं सर, वो लड़का राजू, उसको समझा दो, समझ गए कि नहीं? कौन जी लड़का सर, है, आप क्या आइए नाम? सर। यहाँ ठीक करना है, हिंदी चाहिए इनको।
रखो, अब आज क्लास नहीं लेंगे, बंद करो, जाओ। एक स्क्रीन शॉट भेज देना, अब परसों होगा तुम लोगों का क्लास, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक से पढ़ावा में लड़की ने और सब खाली खिसिया के खाली सब हेलो सर खाली। ये में आ गए हो, अगर फिर भी इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। तो भैया अगर सर पॉइंट कुछ टू सही पॉइंट से नहीं पूछेगा हमेशा, मतलब खानदान सर में नहीं जन्म लिया है जी इंग्लिश से बोल भाई। सब इंग्लिश नहीं आ समझेगा जाओ। सर, पॉइंट ऑफ मीनिंग वो नहीं भुलाता है। और आप समझ जाते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग उतना नहीं पढ़े हैं जी, गांव देहात से बिलोंग करते हैं। हैं भाई क्लास तब खाली अगर हाँ में हाँ करो मिलावा के तब कुछ पता बोला कि नहीं ये चलेगा। ना। देखिए आज के पास सेवा कर रहे हैं दादी को या अरे कह दो पॉइंट हिंदी में ना हो इंग्लिश में समझ में तो कोई हाँ पूछे भैया नहीं सही कि बात कर रहे हैं। एक आध दो पॉइंट वैसे बीच में जब बोलते ही हैं। कहाँ अगर बोल रहे हैं क्लास भैया? करते ऑफलाइन क्लास करते तो आपको पता चलता। भैया बहुत ठीक क्लास ना? की है लेकिन ऐसा रीडिंग नहीं पढ़ पाए कहीं। बाकी बहुत लोगों को तो जो आपने जितना भी क्लास आते थे 10 लोग कम से कम होंगे क्लास में, अच्छा तो पिछला डेली सेशन क्लास हुआ था करते भैया, थे। उसमें पिछला सेशन में कितना बड़ा से हिंदी बताए थे, इस बार कहाँ कुछ बताए सर? पिछला सेशन परामर्श सर ले रहे थे। रहमान क्या सर करें, ये परामर्श सर नहीं है। सही ऐसे नहीं ना हुआ सर कि मतलब समझ में आया नहीं आया कुछ बोलिए मत। ये थोड़ा बहुत ये क्या हो रहा है, किस चीज के बारे में बता रहे हैं, अब थोड़ा बहुत पॉइंट सर अगर आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमको पता है इतना इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा। सही ऐसा बात सुनिए ना भैया, ऐसा बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिसका जानकारी रहेगा वो सब जानवे करेगा। नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं, बहुत सारे पॉइंट हमको भी भैया नहीं पता बिहार चलता। है ना। इंग्लिश डिपार्टमेंट है ये, हिंदी नहीं है सर, तुम बीच बीच में हिंदी बताएंगे। अरे भाई आप इतना मतलब कुछ भी नहीं बताएंगे। तो फिर क्या कहना था, फिर आगे तैयारी ना करते हैं। अरे जनरल कंपटीशन नहीं चल रहा भाई, ये मास्टर्स हो इसमें रहा सर है। एक ही चीज बताइए कि ये एकेडमिक क्लास नहीं ना है, ये ऑनर्स है। आप जो कर रहे हैं पहले सोच रहे हैं आप, पोस्ट तो ग्रेजुएट मैडम वाला है ये क्लास। तो मैडम ऑनर से इसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि बिना पढ़ले जान जाएगा आदमी। हिंदी आपको समझना है सर, इंग्लिश ही बोलेंगे। सर इंग्लिश बोलेंगे तो सर इंग्लिश बोलेंगे तो हमको मीनिंग वो समझावेंगे ना मैडम कि हम इसका मतलब क्या होता है। जो सुने आप उसको गूगल कीजिए बस, इसके अलावा ऑनलाइन में कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग कहाँ थे? तो बोल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में अगर क्लास करते तो आपको अच्छे से पता क्लास तो चलता। करना है नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब करना है सिर्फ। आप सर को क्लास में तो लैंग्वेज फिर भी तुम इजली लैंग्वेज सर बोल रहे थे, इतना भी तो हार्ड नहीं था। कभी उनका ऑफलाइन क्लास किए हो? किनका? ये पहली बार उनका क्लास कर रहे हैं। ऑफलाइन में कहाँ थे? ऑनलाइन में बाबा बन रहे हैं सब। ऑफलाइन में घरे थे और कहाँ थे? ऑफलाइन हाँ तो क्लास भाई में अभी भी घर में ऑनलाइन में रहिए सब भाई। बाबा बन रहे हैं। रमन सर हिंदी इंग्लिश दोनों समझाते हैं, नरेंद्र सर कछवे सर नहीं बोलते हैं हिंदी में। तो दोनों मतलब डिस्क्राइब करते हैं तो अच्छा ना रहता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ और कोई बात नहीं है। बच्चा का क्लास ये राजीव हाँ और सिर्फ खाली यस सर के लिए चाहिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा वो मायने नहीं रखता है, सर कीजिए। हाँ वही ग्रेजुएशन हमको में भी आप लगा। लोग कहाँ थे? भाई अगर तुम क्या लोग चीज? को कक्षा में तो तुम लोग इंग्लिश क्यों लिए हो? अगर यस सर ही करना है तो फिर इंग्लिश क्यों लिए हो? इंग्लिश लेना ही नहीं चाहिए था अगर इतना प्रॉब्लम है तो। तो बीच में बोल रहे हैं तो आप लोग तो मना कर रहे हैं कि नहीं बोलिए। पहले नहीं ना पता चला। किया है, आप जब ये सर बताओ। बोले कि नहीं हिंदी में नहीं देंगे तो फिर बार रिक्वेस्ट करके सर को गुस्सा क्या देना। ये इन्होंने कभी कछवे सर का क्लास अटेंड ही नहीं किया है तो इनको क्या पता होगा कि वो कैसे नेचर के हैं। हाँ वही बात नेचर परमहंस सर जैसा नहीं होते हैं।
परमहंस सर आप दोनों तरफ से समझा सकते हैं, लेकिन कछवे सर नहीं बोलेंगे, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। और प्लीज नेक्स्ट टाइम से नियम है। वो कभी क्लास नहीं लेंगे, तो किसी एक का गलती की वजह से हर कोई भुगतेगा ना। मैडम this is not way to teach, madam. Just will we speak loudly कि no one can attend the class in part 1 semester first. पता है द वे ऑफ टीचिंग पढ़ा दो आपको जरा but it is not way to teach. परमहंस सर की क्लास में भी इंटरफेयर कर रहे थे, बात बात पे आप आज भी कर रहे थे, तो ये कोई तरीका नहीं होता है। आपसे सीनियर है, प्रोफेसर है, उनको बीच बीच में डिस्टर्ब किए जा रहे हो। समझने और समझाने का मतलब सबको पता है, हर किसी को क्वेश्चन पूछना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपके जैसा सब करते हैं। मतलब नहीं पूछ दिया तो दिक्कत हो गया, नहीं सर पढ़ावेंगे। जब कुछ समझ में आएगा ही नहीं तो फिर आपको सर ने कितनी बार बोला कि वो हिंदी में नहीं समझाएंगे, फिर भी आप लगे पड़े थे कि बताओ आपका क्या मतलब दोस्त है क्या वो, कि आपका हर बात मान लेंगे? अरे हम लोग उनका स्टूडेंट है, हमारा बात नहीं मानेंगे तो किसको बात मानेंगे वो? आपने कभी उनको सामने से देखा भी है या गए हैं, आपने क्लास किया है? जाएंगे पहले चरण स्पर्श करेंगे कि बाद में पूछेंगे। लिए थे तो नहीं किया आप इतना क्यों जिद कर रहे हैं? जिसको जिस तरीके तरीका पड़ेगा। आप हर बिलिए माना कि आप हर बिलिए, सबका वही सेम कंडीशन नहीं ना है। तो सबका सेम कंडीशन ऑनलाइन क्लासेस में निकल रहा है, ऑफलाइन में कभी गए हो कॉलेज, कभी क्लास किए आप लोगों ने? अब जब मौका मिलती है आदमी फर्स्ट सेमेस्टर में पता नहीं चला हम लोगों की क्या हो रहा है नहीं हो रहा कुछ। ये तो गए क्लास अच्छी एग्जाम के समय सबसे बच्चे नहीं ना हो, आप लोग बड़े हो, इतना तो समझदार हो, खुद से भी प्रिपरेशन कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है ठीक है मैडम, ही टीचर है। अच्छा ठीक है सर, तो आप लोग पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है बस। अरे नहीं पढ़ाने डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन एक डिस्कशन होता है ना। नहीं सर का मन नहीं, जबरदस्ती करेंगे, गजब हाल है। सर को डिस्टर्ब करेंगे उससे हमको तो कोई रास्ता मिलता ना ताकि हम आगे कुछ सीख पाते। अच्छा चलिए ठीक है, आप क्लास कीजिए। हो गया बंद करो। ठीक है, अब हम ग्रुप में देखो किसी का अगर नहीं है उसमें नाम तो बता दो। अब समझ में नहीं आएगा करेंगे कुछ नहीं, बेकार है। जब इतना प्रॉब्लम है, जब क्लास चलेगा तो गलत नहीं है, आपने जो बोला वो गलत नहीं है, बट वो सर ऐसे वो नहीं बताएंगे तो आप फिर मत बोलो ना। आप मत अगर बोलो। इनसे रिक्वेस्ट करो, बोलो कि इंग्लिश में ही थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता दे, तो वो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में। बस जो बोलो, बट कछवे सर की क्लास में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि उनका नेचर बहुत डिफरेंट है। हाँ सही बात है। अच्छा ठीक, एक मिनट सर, जब मतलब नहीं बताएंगे तो सब समझ में नहीं आएगा तो क्लास अटेंड करेगा कहाँ लगे? अरे भाई कभी ये क्लास नहीं चल रहा है, ये लेक्चर चल रहा है। लेक्चर में टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं, उसके बाद लास्ट में अगर कुछ डाउट हुआ तो स्टूडेंट पूछता है। बाकी बीच में जितना देर टीचर बोलते रहे उतना देर स्टूडेंट को नोट किया, अपना समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ ये कॉलेज में नहीं होता, बड़े बड़े जितने कॉलेज है ना आप जाकर पता कर लो, लेक्चर ऐसे ही होते हैं। ये 9th-10th का क्लास नहीं चल रहा है जो ये एक एक पॉइंट बैठ के समझाएंगे, अगर लेक्चर चल रहा है। कम करिए, आप ध्यान से पूछवे नहीं करेंगे कुछ तो आप याद कर पूछिए भाई, लेकिन थोड़ा अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं अगर हमको बताना है हिंदी में तो आप भी समझिए। चलिए प्रश्न कीजिए तभी खत्म होने के बाद पूछिए, बीच में मत और पूछिए तो इंग्लिश में ही पूछिए। सर जब बोले कि ये हिंदी डिपार्टमेंट नहीं है, इंग्लिश से पीजिए में आगे, तो आप भी थोड़ा समझिए, बोलिए कि यस सर इंग्लिश में ही थोड़ा बोलिए, थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझा देंगे वो भी। अब अटेंडेंस का बता दो भाई, किसका किसका उसमें नहीं है, पैसा नाम भेज देंगे, रोल नंबर के साथ बता देना। बाकी चलो बंद करो क्लास। चलो क्लास बंद करो, लेफ्ट करो सब।